Railway Minister, N. Gopalaswamy Iyengar from Tamil Nadu. He had a big idea, a great idea, which has been sustained now for 60, 70 years. He came up with the idea of railway zones. It was not there before that, sir. After that, another great big idea which has sustained over 5, 6 decades is Madhu Dandavateji, where instead of the sleepers just being of wood, he thought we should put cushions there, and that makes such a difference to the common people who were traveling. That is a great idea which has sustained the test of time. Nitish Kumarji had a Tatkal scheme. Lalu Prasad Yadavji had the wonderful Garib Rath scheme, which was his big idea. Mamata Banerjee had a Vision 2020 document, which we'll come to later. The Duronto Express, the Izzat Pass, for those below the poverty line. I want to ask this government, from 2014 to 2021, what's their one big idea which will sustain the test of time 10 years, 20 years from now? Oh, why one? They'll tell me they've got 5, 6, 7. So let's go one at a time. Vande Bharat Express. The Vande Bharat Express, the cost of a ticket is 1,500 to 3,000 rupees, somewhere in that range. This is your big idea, and you're entitled to it. Keep it. Because your outlook on the railways is different from the Trinamool Congress and many other parties' outlook on the railways. For us, the railways constitute the infrastructure for the fundamental right of every Indian citizen to move from point A to point B. It's a fundamental right as far as transport goes. You may look at it differently, we don't. So much for your Vande Bharat. Let's come to your second so-called big idea, 2017. Subsume the railway budget into the general budget. We objected to it that time, we object to it now. Former railway minister, now Chief Minister of Bengal, said, quote, this will damage the very core of the transport system. What is this subsume which has happened? Tell us. LIC, you said 1.5 lakh crores. My direct questions, please address it in your answer. Why was only 30,000 crores been given? What happened after the first tranche? Why no further funding? Tell us about the methodology of funding. Tell us about LIC interest rates. Tell us about repayment issues. Address these in your answer. We'll be happy to know. Your third idea. As I said, your big idea will never be in tune with our idea because your outlook to the railways is different and our outlook is different. Fundamental right of movement. Your third big idea is the train from Mumbai to Ahmedabad, call it superfast, call it bullet. We feel, nothing wrong with the bullet train maybe at some later stage, to make that bullet train cost you about 200 crores a kilometer. Our priority would have been the dedicated freight corridor for sabzi, for chawal, for gram, for everything else at 25 crore kilometers a kilometer. 200 crores, 25 kilometers. I understand, and I'll say this on the floor of the House, that bullet train is your vanity project. But since we're talking about big ideas, let's talk about some of those ideas which were promised in 2022. And we are all so eagerly looking forward to farmer income will double, 2022. Bullet train will come, 2022. 5 trillion economy, 2022. Water and toilet in every home, 2022. Electricity for all, 2022. So for those of you who want to bring these high-speed trains, nothing against high-speed trains, but think of a little railway station called Kitam. It's a small town in Uttar Pradesh. Every day, 96 trains whiz past Kitam on the New Delhi-Agra route. Rakesh, if he was to want to take a train,
he would have to take the Agra-Delhi passenger, which doesn't run on Sundays, and the average speed of those trains is 30 kilometers an hour. Your priority, our priority. Now let's come to your next big idea. I want to ask you, sir, since we think it's a fundamental right of travel, who told you to shut the railway network down in 4 hours before COVID? This is a precious resource of our country. You misuse that resource. 120 lakh passengers travel long distance in the railway. Just look at this number, 120 lakh. Imagine you had COVID restrictions, you cut the number down to 60 lakh. Instead of saying 4 hours, keep it open for 5 days, you would not have had the migrant crisis. You would not have had the migrant crisis, sir. And those videos from Muzaffarpur railway station, I don't want to remind you of that, of the little child with the dead mother covered, because yesterday, day before yesterday, was 2 years of that anniversary of clanging, which... So these are your big ideas, sir. Private trains. You'll say, this is my big idea. Let's ask you some questions on private trains. Tejas trains halted 8 months later. 2021, we are told, dozens of companies filed tenders. Whenever there are RTI activists, and RTI activism is part of our democracy, whenever they write to railway boards, no data available. What is the communication for these private trains? Sir, there was empowered group of secretaries which was set up by the Railway Ministry. How many meetings have they had? Share with MPs what was discussed at those meetings. So your next big idea, you say, is federalism. I can give you 12, 13 projects in Bengal. Everyone will have their own states, where the allocation for that is 1,000 crores for the year. Whenever there's a problem with the railway work, they'll say state government land acquisition. There are so many other examples to give you, but I thought the real good one is beyond Bengal. It is for the Southern Railway. And this is from the Pink Book. Now the Pink Book, which is to come out on the day of the railway budget, I know this subject a little. It takes you weeks to calculate. So after some calculations, Southern Railways got less than 400 crores last 4 years. The Northern Railways, if you add it up, comes to about 30,000 crores. So I'm not getting into the numbers, but conceptually, we talk so much about federalism, but where is the federalism? I can go state by state, sir. So I urge this ministry, since you have a full railway department. Of course, the joke here was that some people were saying that we first discussed the Northeast Ministry, then we discussed the Scheduled Tribe Ministry. Third, I said, which ministry are you speaking on? So I said, now we are discussing the PMO. So I urge this ministry. They've got the numbers to share the percentage of what was the allocation in a state, in what percentage has that state been given its percentage. So these are your ideas. Just a minute. Manish Shukla ji, please, back nahi karna aap. Please, you continue. Maybe you had some big ideas about the Northeast which we missed. The Imphal railway station is still under construction. Sir, another big idea for the Northeast who can't afford expensive freights. Do consider, in a bigger way, to make the freight rates affordable in the Northeast. What steps has the government taken to tap the Trans-Asian network, sir, because there are many of those South Asian communities which are closer? Look at these as a big idea, sir. Look at these as big ideas. Because as I said, your view on the railways and our view on the railways is different. I have a copy here of the vision document. You're following some of this, we're happy. I'm reading from the vision document which Mamata Banerjee was Chief Minister. Raising the speeds of passenger trains from 130 to 160 kilometers. Good, on track. Don't forget the regular trains. Railway should set up 50 world-class stations. Vision document 2010. Doing now, good. You've had a lot of experience, Railway Minister. First as a bureaucrat and then with
Adla infrastructure. So these are all good experiences for you. And you said in the Lok Sabha, who does the railway track belong to? You said railways. Who does the stations belong to? Railways. Who owns the train coaches? Railways. Who owns the signaling system? Railways. Then why is there any talk of privatization here? I ask you, sir, who owns the airports? Mostly Government of India. Who owns the runways? Mostly Government of India. Who owns the air infrastructure? Mostly Government of India. Who sold Air India? So we think, sir, this government must look at focus differently. We will listen here to their 7 ideas, which are their great ideas. You compare those 7 ideas to what were previous done by the Railway Ministry, and then you look what touches the lives of people. Who is our audience? Who is our consumer? Because if you think your consumer, your co-consumer, is the passenger who gets on a train in Ahmedabad and has to reach Mumbai, no. Very good, do that. But don't forget who this railways is for. I will conclude by saying, please do remember, you're doing nobody a favor. And since we have 2-3 minutes time, sir, we have one more speaker. He will take 2 minutes after this. So I'll finish before time. Thank you, sir. Thank you, Derek ji. Next speaker, Shrimati Priyanka Chaturvedi. Not present. Shri Ajay Pratap Singh ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अपने दल के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे रेल विभाग के क्रियाकलाप पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय उपसभापति महोदय, सदन में रेल के इतिहास के बारे में बताया गया है, रेल की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और रेल विभाग के कार्यकरण के संदर्भ में भी पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन जब मैं रेल विभाग के बारे में सोचता हूं, विचार करता हूं, तो इसके कार्यकरण को नापने का मेरा अपना ही अलग पैमाना है। मेरा पैमाना है मेरा गृह प्रदेश, मेरा पैमाना है मेरा मध्य प्रदेश। रेल विभाग ने मध्य प्रदेश को क्या दिया, रेल के कौन से प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, इसके आधार पर जो मैं देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, मैं अपनी राय बनाता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष जो रेल विभाग का आवंटन है मध्य प्रदेश के लिए वो ऐतिहासिक है। इतिहास में कभी इतना पैसा मध्य प्रदेश को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से देश के बीचों बीच स्थित है। इसलिए लोगों को लगता होगा कि मध्य प्रदेश में तो रेल का बहुत अच्छा संजाल होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश के लगभग 20-22 जिला मुख्यालय अभी भी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रेल लाइन का जो औसत किलोमीटर है वो देश के कई बड़े राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। लेकिन इस वर्ष माननीय रेल मंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश को रेलवे का आवंटन दिया है वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का है।
और ये 12,000 करोड़ रुपए के माध्यम से कई जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, उन महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में गति आएगी, वो पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। मैं उनमें से कुछ प्रोजेक्टों का उल्लेख करना चाहता हूं। रतलाम, महू और अकोला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को जो आवंटन दिया गया है, उसके माध्यम से इंदौर और मुंबई के बीच में 65 किलोमीटर की दूरी कम हो जाने वाली है। दूरी कम होगी तो गति तेज होगी, समय की बचत होगी, आवागमन में सुविधा होगी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है इंदौर दाहोद, जो वर्तमान में 375 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चात ये दूरी घटकर 205 किलोमीटर रह जाएगी। इंदौर उज्जैन की जो रेल लाइन है, उसके दोहरीकरण के लिए भी 1353 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झांसी और बीना दोनों ही महत्वपूर्ण स्टेशन है और दक्षिण भारत को जाने वाली अधिकांश ट्रेनें इस मार्ग से गुजरती हैं। तो ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए यहां पर तीसरी रेल लाइन की आवश्यकता थी। इस मार्ग पर रेल लाइन का तिहरीकरण किया जा रहा है और ग्वालियर और श्योपुर मध्य प्रदेश के एक अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए माननीय रेल मंत्री महोदय ने इसके लिए 2912 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसके माध्यम से श्योपुर न केवल रेल के मानचित्र में आएगा, अपितु श्योपुर में अनेक तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार और व्यापार बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन है धार से छोटा उदयपुर, इसके लिए प्रारंभिक रूप से 100 करोड़ रुपए आवंटित किया है और यह रेल लाइन व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस रेल लाइन के माध्यम से इंदौर, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र है, उसकी पहुंच गुजरात के पोर्ट तक हो जाएगी और इसके माध्यम से इंदौर में व्यापार खूब फलेगा फूलेगा और उसका लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को प्राप्त होगा। और मैं अपने गृह जिले की भी बात करना चाहता हूं। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, इसका शिलान्यास 1997 में किया गया था हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इस रेल लाइन के लिए भी 650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस रेल लाइन में रीवा से सीधी के बीच में जो खंड है, उसमें दो बड़ी चुनौतियां थी। एक सोन नदी पर पुल, जिसमें काफी लागत आने वाली थी, अन्य तरह की भी तकनीकी बाधाएं थी। वो सारी बाधाएं दूर होकर वो पुल बनकर तैयार है। और दूसरा, रीवा से सीधी के बीच में जो कैमोर पहाड़ है, उस कैमोर पहाड़ को भी पार करना एक चुनौती थी, लेकिन वो चुनौती भी पार कर ली गई है। सुरंग का निर्माण हो चुका है। अब छुटपुट जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ये रेल लाइन भी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेल लाइन का शिलान्यास 1997 में हुआ, लेकिन इसकी चर्चा आजादी से पहले से हो रही है। केवल चर्चा होती थी, लेकिन कभी इस रेल लाइन पर काम नहीं होता था। काम शुरू हुआ अटल जी के कार्यकाल में और काम आज पूर्णता की ओर बढ़ रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। इस सदन में अनेक लोगों ने मनुष्य की, विशेष रूप से भारत में एक आम आदमी की औसत आयु की चर्चा की है। 69 वर्ष औसत आयु है। अब मुझे लगता है कि इस सदन में हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, 2-4 अपवाद छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोग उस औसत आयु के पैमाने पर जीवन के उत्तरार्ध में हैं। और
मैं भी लगभग जीवन के उत्तरार्ध की ओर ही हूं। ये जो ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन है, हमारे सीधी और सिंगरौली जिले के लोगों की दिल की धड़कन है, उनके दिल में बसती है। अनेक पीढ़ियां गुजर गई हैं इसकी चर्चा करते हुए, सुनते हुए। वर्तमान पीढ़ी भी इस रेल लाइन की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रही है। उनके साथ मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस रेल लाइन के संदर्भ में इतिहास का भाग न बनूं। मैं अपने जीवन काल में इस रेल लाइन को पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं, और न केवल पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूं, अपितु इस रेल लाइन के पूर्ण होने के पश्चात रेल में बैठकर सीधी तक जाना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य पूर्ण होगा और हमारे सीधी सिंगरौली के लाखों नागरिकों के साथ मेरा भी ये सपना साकार होगा। मैं कुछ हमारे अंचल की जो आकांक्षाएं हैं उसको भी मुखरित करना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं। वर्तमान समय में कोविड के दौरान बहुत सारी अजय प्रताप जी आप समाप्त कीजिए। बहुत सारी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। 2 मिनट। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्ववत जितनी ट्रेनें हमारे अंचल में चल रही थी, जितनी ट्रेनें हमारे रीवा से चल रही थी, सिंगरौली से चल रही थी, शहडोल से चल रही थी, अनूपपुर से चल रही थी, वो सारी की सारी ट्रेनें आप यथावत प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा रीवा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, बहुत पुराना शहर है, बघेल राजवंश की 16वीं शताब्दी से राजधानी रहा है, आजाद भारत में भी विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है, लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब उससे यह दर्जा छिन गया। इसलिए रीवा हमारा विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। इसका ये गौरव आप वापस लौटा सकते हैं। अभी आपने रीवा को दिल्ली से जोड़ा हुआ है, अगर आप रीवा को देश के चारों महानगर से जोड़ दें, आप मुंबई से जोड़ दें, चेन्नई से जोड़ दें, कोलकाता से जोड़ दें, तो रीवा तेजी से विकास करेगा और रीवा के माध्यम से पूरा बघेलखंड विकास करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसका संज्ञान लेंगे। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि शहडोल से रीवा रेल लाइन, इसके बारे में मध्य प्रदेश की विधानसभा में संकल्प हमारे सीधी विधायक आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी ने प्रस्तुत किया था और सर्वसम्मत से वो संकल्प पारित हुआ था। वो संकल्प यहाँ पर भेजा भी गया है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उस संकल्प का संज्ञान ले और उसको सर्वे करके अगर वो रेल लाइन निर्मित होती है तो हमारे अंचल का जो वनवासी क्षेत्र है, हमारे अंचल का जो गरीब आदमी है, हमारे अंचल का जो मजदूर व्यक्ति है, उसकी आकांक्षाओं को बल मिलेगा, उसके सपने पूरे होंगे। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद। मैं इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Deputy Chairman, sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the working of the Ministry of Railways. At the outset, I congratulate the Honorable Minister of Railways, Shri Ashwini Vaishnaw for successful testing Kavachi indigenous automatic train protection system. Sir, Indian Railways is the third largest railway network in the world. It has over 68,102 route kilometers under single management. It is also one of the major employment providers in the country. Lakhs of posts in the railway, including in safety-related departments like signalling, track maintenance, are left vacant. I urge the Minister to take necessary steps to fill up these vacancies. Sir, now I come to the railway projects pertaining to my state, Andhra Pradesh. There are 33 projects, 16 new lines and 17 doubling, costing 63,731 crores, covering a length of 5,706 kilometers, falling fully or partly in the state of Andhra Pradesh or under different stages of planning, approval and execution. In respect of my unstarred question 756, dated 3/12/2021, Sri Ashwini Vaishnaw ji has given written reply in respect of 6 projects on cost-sharing basis within the Andhra Pradesh state. In respect of the projects, Nadikudi Srikalahasti new line, the state government has to deposit 13,115 rupees, 15 crores, and Bhadrachalam Kovuru new line, government did not give, AP government did not give consent.
Vijayawada, Gudivada, Bhimavaram, Narsapur, Gudivada, etc. 50% of line is 1,400 crores. And Kadapa, Bengaluru new line is also 189 crores. Kotipalli, Narsapur is a long pending demand, 358 crores. Tumkuru, Rayadurga new line, the government has to give consent, and the Andhra Pradesh government did not. Government of Andhra Pradesh is not depositing their outstanding share in cost sharing project. This is affecting the executing these projects. This is the reply given by the Honorable Railway Minister. Sir, due to unfortunate situation of the state of Andhra Pradesh, the state government has decided not to release its share of fund required for project implementation. The state of Andhra Pradesh is on the verge of disaster. The state is in mortgage. Government lands and properties, even the capital of Amaravati lands, are up for sale. Future revenues are being escrowed to raise borrowings to meet the present daily expenses. The state is in vicious debt trap, with the government taking loans to repay the debt, and the future of the people of the state is gloomy as the state is being steered in reverse direction. No developmental activities are undertaken by government No of running AP, commentary, please. including maintenance of existing Please, no infrastructure running commentary, facilities. please. Mandatory constitutional provisions are also violating by the government of Andhra Pradesh, despite of cautions by the central government. Under these circumstances, I urge the Honorable Minister to be magnanimous in the case of Andhra Pradesh and to come with an alternative to complete these railway projects so the development of activities in the state of government may not be hindered. As per the provisions of the Andhra Pradesh Reorganization Act under Section 93 read with the 13th schedule, Clause 18, Indian Railway shall within 6 months from the appointed date, that is from 2nd June 2014, examining the establishing a new railway zone in the Saksar state of Andhra Pradesh and to take an expeditious decision thereon as per clause 12 of 13th schedule, the government shall examine the feasibility of metro rail facility in Visakhapatnam and Vijayawada, Guntur, Tenali Metropolitan Urban Development Authority within a period of 1 year from the appointed date, that is 2/6/2014, and take expeditious decision thereon. Till now, both the projects have not been implemented. In the year 2019, the then Honorable Railway Minister Sri Piyush Goyal ji came to Visakhapatnam and announced that the central government is going to set up a new railway zone under the name of South Coast Railway Zone. In 2020 budget, 170 crores have been allocated. In 21-22 budget, 40 lakhs only allocated. And